मैं literally I saw the presence of God. I literally saw the presence of God come down. ऐसा मूव होते हुए मैं देख रहा था. I seen the presence of God move around this place. और उसी झुंड के बीच में I saw the mighty hand of God. And in the presence of this crowd and company, I seen the mighty hand of God. और प्रभु बोलने लगा, देख ये हाथ को देख ले. And the Lord was saying, look at these hands of mine. आज यही हाथ यहाँ कुछ लोगों के ऊपर एक माइटली में आने के लिए तैयार है. Today you are going to see and experience the mighty hand of God in your midst this morning. कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया. Somebody raise your voice and scream and shout hallelujah. मैं चाहता हूं अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के रखें. I request you to lift your hands to the heavens. और उसको बोले, Lord, I thank you for this wonderful day. And I want you to say, Lord, I thank you for this wonderful day. This afternoon. This afternoon. प्रभु तू उस सामर्थी हाथ का एक्सपीरियंस को तो हमारे जीवन में देने जा रहा है. Father, you're going to see the glory and the honor and the praise of these hands in our lives this morning. और प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता है. And the Holy Spirit is telling me this morning. वही सामर्थी हाथ कुछ जवानों के ऊपर this afternoon powerful तरीके से आने जा रहा है. And this morning the Lord is saying that same glorious hand and that glorious touch is going to come on some of these young men and women over here. यहाँ कुछ जवान लोग को मैं देख रहा हूँ. I am seeing the young men and women over here. कुछ लोग आज के दिन एकदम भूख और प्यास के साथ आए हुए हैं. Today, some of them have come with hunger and a thirst in their heart. और प्रभु का आत्मा मुझे एक ही बात बोलता है. And the Spirit of the Lord is telling me this one thing. मेरा वो सामर्थी हाथ तेरे ऊपर आने के लिए तैयार Today, है. the Lord is saying, my glorious hand is going to come over you this morning. और आज के दिन छोटे बच्चों को भी ऊपर प्रभु बोलता मैं अपने हाथ को बढ़ाने के लिए And तैयार today the हूं. Lord is saying that even on the little ones, the small children also, I'm going to extend my glorious hand and touch them. आप जहां भी वो जवान जहां भी वो छोटे बच्चे लोग हैं. Wherever you are, that young man, that young woman, and that little child, This is the day that the Lord has made. this is the day that the Lord has made. एक पावरफुल हैंड आपके ऊपर आने जा रहा A है. powerful hand of God is going to come and touch your life this morning. प्रभु बोलता आज का डेट और टाइमिंग दोनों नोट करना. The Lord is saying, make note of today and today's time when I'm going to touch you. और वही पावरफुल हार्ट इस सेविंग ग्रेस मिनिस्ट्री के ऊपर भी आने जा रहा है. And the hand, the glorious hand of God is going to spread out even on the Saving Grace Global Ministries as well. जैसे ही मैं अंदर आया पास्टर साहब को एक बात को बोलना प्रारंभ As soon किया. as I entered in this morning here, Apostle Donald told me to pray. ये इंग्लिश सर्विस और एक लगने वाला है इधर बोल के. That there, yeah, Apostle Donald said, keep it in prayer that we are going to have another English service in this place. एक अभी चल रहा है. One is happening now. एक बहुत जल्दी फिर से स्टार्ट होने वाला है. Prophet Anand spoke to Apostle Donald and declared that we are going to have another English service in this place. और वो सर्विस And that service, पूरे जवान लोग रहेंगे यहाँ. it's going to be in that service, all the youth will be there, all the young ones. सराउंडिंग से मैं लेकर आएगा. I'm going to bring all the young ones from the surrounding areas over और here. सबसे मजे की बात, And the most beautiful thing, बच्चे लोग छोटे बच्चे लोग अपने माँ बाप को बोलेंगे हम लोग नहीं जाएंगे, वो सर्विस को अटेंड करना है. and the little children will say, we are not going to go anywhere, we are going to attend that service. The second service, the young ones will say that. प्रभु का आत्मा मेरे को ये बात बहुत पावरफुली तरीके से बोल रहा है. The Holy Spirit of God was speaking to me in a very powerful way this morning. The time is coming. I saw the different countries का flag को इधर लहराते हुए मैं देख रहा हूँ. The time is coming when I seen the different nations, the flags of different nations flying high over here in this place. ये मिनिस्ट्री लोगों को है ना, मैं ऐसा बोलूँगा मिशनरी को तैयार करके भेजेगा. In this ministry, God is saying, I'm going to prepare my people to become missionaries to the nations. जवान लोगों को तैयार करके रिलीज करेगा. I am going to use the young men, young women to become missionaries to the nations. This is the promise of God. This is the promise of God. Senior man of God say, The man of God says, and woman of God say. and the woman of God says. ये दोनों का प्रार्थना यही है. The man and woman of God, they consistently pray for this thing. और प्रभु का आत्मा बोलता मैं इसमें आमीन का मोहर लगाया हूँ. And God has said that I have placed my seal of so be it, amen, upon this. कोई तो चिल्ला के बोले हालेलुया.